Marhaba. Okay, so this video is about admission in Aga Khan University because Aga Khan University का admission procedure is really different from your private medical university admission and your government university admission because Aga Khan University का test खुद लेता है. So I have tried to cover everything including the eligibility criteria, the basis of admission and the fee structure and the interviews and everything related to it. So if you are a pre-medical student and you want to appear for Aga Khan University test, then you should watch this video. And still, if you have queries, you can tell me in the comment box below. Let's begin. So the test for Aga Khan University is not conducted by NTS, it is conducted by Aga Khan University itself. So this test is pretty much different from the NTS test. So you have to follow a very different strategy when you are preparing for Aga Khan University test. Also, अगर आपका इंटर के एग्ज़ाम या फिर ए लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बाद 2 या 3 महीने होते हैं जिसमें आपको कम्प्लीटली प्रिपरेशन करनी होती है फॉर योर आगा खान यूनिवर्सिटी टेस्ट बिकॉज वो जल्दी होता है. इसके अलावा आगा खान यूनिवर्सिटी ऑल्सो कंडक्ट्स इंटरव्यूज़ और सिलेक्शन क्राइटेरिया में इंटरव्यूज़ भी आते हैं. नाउ what is the eligibility criteria for Aga Khan University test? Eligibility criteria, if you are a Cambridge system student, then you must have at least 3 Bs in your all 3 science subjects, and if you are an inter student, then you should have at least 60 to 65% in your science subjects. यानी आपका science aggregate 60 to 65% होना चाहिए if you want to appear for the test. So अच्छा, these percentages are least minimum, यानी least percentages हैं ये आपकी होनी चाहिए if you want to appear for the test. But for securing a seat and for actually getting admission, your grades should be very good because competition is very tough. A lot of candidates that appear for the Aga Khan University test are mostly the toppers, and you are competing with them. So you should have average, not average marks, you should have above average marks for the Aga Khan University test. The admission for Aga Khan University is based on 4 things. 4 things are usually counted when they are selecting the candidates for the admission. First thing is your grades, your inter की percentages या फिर inter के grades, A levels की grades. Then comes your letter of recommendation from the interviewers. जैसे आपका मैंने बताया था कि interview होता है after your test. So the interviewers, the person that takes your interview recommends you फर्दर कि आप किस तरह आपका इंटरव्यू गया उसके बेसिस पर आपको रिकमेंड किया जाता है एंड दैट इज़ काउंटेड ऑल्सो. जितना अच्छा इंटरव्यू होगा उतना अच्छा स्कोर होगा, जितना कम बुरा इंटरव्यू होगा उतना कम स्कोर होगा. नेक्स्ट थिंग इज़ योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. आगा खान गिव्स अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, अगर आप स्कूल में स्पोर्ट्स करते हैं और एनी कॉलेज में स्पोर्ट्स करते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डिबेट्स, if you are a debater, then you also have to submit the certificates of your achievements of your participation in sports and in the debates and any other extracurricular activities. So this adds up into your points. More certificates, more chances of getting admission. Then comes your letter of recommendation from your college. Your college teachers recommend you on the basis of your conduct in college or your overall personality and your academics. So these 4 things matters a lot when you are appearing for Aga Khan University test. और मेरिट लिस्ट इसी बेसिस पे बनती है. टेस्ट जो Aga Khan University लेता है it is not counted as the basis of admission because वो सिर्फ आपको पास करना होता है. They are just checking that if you are eligible to apply or not. जो चीज़ें मैटर करती हैं वो ये 4 हैं. So you have to work on these first and then you have to prepare for the test. Form for Aga Khan University this year was supposed to be submitted online on their official website. मैं link description में लगा दूँगी. But unfortunately for this year, form submission की last date was 23rd June, तो वो निकल चुकी है. And for this year the test is announced to be taking place at 4th of October 2020. So ये अभी तक ऑफिशियल है उनकी वेबसाइट पर. आई एम नॉट श्योर कि वो एक्सटेंड करें बाद में, बट अभी तक यही ऑफिशियल है. आप जाके देख भी सकते हैं ऑन द नोटिफिकेशन, वहाँ पर उन्होंने नोटिफिकेशन लगाया हुआ है. सो 4th of October इज़ फाइनल डेट ऑफ द टेस्ट अभी तक. As I have told that AKU test is different from the NTS test. तो NTS टेस्ट में टोटल MCQs होते हैं या तो 100 या फिर 200. Aga Khan University test में there is a total of 120 MCQs. The paper is basically divided into 5 sections. 3 sections are for chemistry, physics and biology each, and the 4th section is of mathematics and the 5th section is of scientific reasoning.
Your first three sections are more related to knowledge and information about each subject you have, and they are more suitable to intermediate students because most of the questions comes from your textbooks. So they are usually asking about the information and the knowledge you have. And then comes the mathematics and scientific reasoning section. They are more suitable to A-level students because it is more related to the concepts and logical explanation of the things, and the question they asked demands your ability to think logically. MCQs कितने होते हैं? Chemistry, physics and biology में से 20 MCQs each, so it makes them 60 MCQs from the knowledge part, and the other section, the two sections, mathematics and scientific reasonings, have 30 MCQs each, so it makes them 60 MCQs, so total of 120 MCQs, and you have to pass the test. जैसे अगर आप 70% लेंगे तो you will have 90% in your 90 मार्क्स लेंगे, so you will have 75% in your test. तो ईजी होता है टेस्ट, बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट. अगर आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं. स्पेशली द साइंटिफिक रीजनिंग पार्ट, वो इतना डिफिकल्ट नहीं आता. यू डोंट हैव टू लर्न फॉर इट, जिससे आपको प्रिपेयर करना होता है. देयर इज़ ऑल्सो अ सिक्स्थ सेक्शन दैट इज़ ऑफ इंग्लिश, जिसमें ग्रामेटिकल स्टफ और इंग्लिश की बेसिक जो रूल्स होते हैं वो पूछे हुए होते हैं. तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता. यू जस्ट हैव टू क्लियर दैट पार्ट, क्योंकि उसमें आपके टोटल MCQs में काउंट भी नहीं होता. तो यू जस्ट हैव टू क्लियर दैट पार्ट. वो आप इजीली कर सकते हैं. इफ़ यू आर फ्रॉम इंटर तो आपने उसमें भी पढ़ा होगा ग्रामेटिकल स्टफ. इफ़ यू आर फ्रॉम O-level तो उसमें भी पढ़ा होगा. तो वो बहुत बेसिक आता है, उतना मसला नहीं होता. The course for Aga Khan University test is given on their website. मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में. You can go and check. There is a whole list of topics that you have to prepare. If you are preparing for the test, उसी में से आता है, उसी में से टेस्ट बनता है. So if you are doing that topics बहुत अच्छी तरीके से, तो आराम से हो जाएगा टेस्ट. इसके अलावा what matters your concepts or ratta. Concepts matter more than ratta. You don't have to cram all the things, क्योंकि test is usually based on your information and your concepts. तो अपने कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा काम करें. मेमोराइजेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, यू हैव टू मेमोराइज इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट योर कॉन्सेप्ट्स आर काउंटेड मोर. ओके, सो द बुक ऑफ चॉइस फॉर आगा खान यूनिवर्सिटी टेस्ट इज़ योर ओन बोर्ड. फर्स्ट आप अपनी बोर्ड जो भी, इफ़ यूर फ्रॉम A-level तो आप अपना बोर्ड करेंगे. इफ़ यूर इंटर तो आप सेन बोर्ड करेंगे. इफ़ अदर देन योर ओन बोर्ड देयर इज़ अ बुक ऑफ चॉइस जो मैं बताऊँगी. आई हैव हैड सम आगा खान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जिन्होंने प्रिपेयर किया था. सो दे रिकमेंड फेडरल बोर्ड, क्योंकि फेडरल बोर्ड से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एग्जैक्ट लाइंस भी आ जाती हैं और रिलेटेड टू देयर टॉपिक्स. तो ऑल द टॉपिक्स दैट आर गिवन ऑन आगा खान यूनिवर्सिटी वेबसाइट वो सारे फेडरल बोर्ड में हैं. मोस्ट ऑफ देम आर प्रेजेंट इन फेडरल बोर्ड. सो बुक ऑफ चॉइस आर फेडरल बोर्ड बुक्स. देन योर सेकेंड प्रायोरिटी शुड बी पंजाब बोर्ड बुक्स. अगर आप फेडरल बोर्ड नहीं पढ़े तो पंजाब बोर्ड. एंड योर थर्ड लीस्ट प्रायोरिटी इज सिंध बोर्ड बुक्स. अच्छा, ये सब मैं बता रही हूँ 3 सब्जेक्ट्स के लिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड योर केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी. इन सब के लिए ये फेडरल बोर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट. यू डोंट हैव टू रिवाइज योर ओन कोर्स. इफ़ यू आर फ्रॉम इंटर और A-levels बोर्ड तो अपने कोर्स की बुक्स पूरी रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज टाइम इज़ वेरी शॉर्ट. यू जस्ट हैव 2 months टू कंप्लीट एवरीथिंग. तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप पूरे कोर्स को रिपीट करें. जस्ट गिव अ क्विक रिव्यू अबाउट ऑल द टॉपिक्स. और बेसिक आपको जो फोकस होना चाहिए वो सिलेबस पे होना चाहिए. आगा खान का जो अपना सिलेबस है उसको अच्छी तरह करना है, जहाँ से भी हो सके, फ्रॉम योर ओन बोर्ड बुक्स और द बुक्स दैट आई हैव रिकमेंडेड. फॉर मैथमेटिक्स पार्ट यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम योर O-levels पेपर 1, बिकॉज आगा खान यूजुअली टेस्ट यू इंटायरली बेस्ड ऑन योर O-levels पेपर 1 सिलेबस. तो आई नो कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बट इट इज़ प्रीटी मच ईजियर. तो जस्ट गिव अ क्विक रिव्यू ऑन ऑल द टॉपिक्स एंड फोकस ऑन द टॉपिक्स दैट यू आर वीक. ऑल्सो SAT 1 पेपर्स आर रिकमेंडेड. SAT 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है, अगर वो आप करेंगे तो ईजिली मैथ्स का पेपर निकल जाएगा. ऑल्सो देन कम्स द साइंटिफिक रीजनिंग पार्ट. साइंटिफिक रीजनिंग पार्ट जो है, इट इज़ बेसिकली द लॉजिकल पार्ट. तो आपको इतना तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है. दे यूजुअली टेस्ट यू अपॉन द प्रेजेंस ऑफ योर माइंड, द फोकस, द कंसंट्रेशन, हाउ प्रेजेंट आर यू, हाउ माइंडफुल आर यू. तो उसमें ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी पजल्स, जो हम यूजुअली इंटरनेट पे सॉल्व कर रहे होते हैं. तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू वांट टू शार्पन योर माइंड देन यू कैन प्रैक्टिस सच क्वेश्चन जो ईजिली अवेलेबल होते हैं टू शार्पन योर ब्रेन. तो वो इनफ होगा. Passing criteria in Aga Khan University is different for every year. Obviously, it depends upon difficulty level of the test. जितना आसान टेस्ट आता है उतना मेरिट ऊपर जाता है, एंड जितना डिफिकल्ट टेस्ट आता है उतना मेरिट नीचे आ जाता है. सो हर साल के लिए डिफरेंट होता है. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि हाउ आर दे कंसिडरिंग द सब्जेक्ट्स.
For example, it happens in Aga Khan University that sometimes they completely or partially disregard a subject from their scoring, and merit is based on rest of the subjects, and it is announced after the test is taken. So you don't know when you're appearing for the test, you don't actually know कि scoring किस चीज़ पे base करेगी, because it has happened in 2018. They completely disregarded mathematics from their scoring, and the merit was made on rest of the subjects: physics, chemistry, biology, and scientific reasoning. So in 2019 they divided the scoring into two bits. It was announced that there is a bit called science bit that includes chemistry, physics, and biology, and the second bit was the logic bit, जिसमें we had mathematics and scientific reasoning. So criteria ये था कि you had to pass you had to pass science bit with 60% and you had to pass the logical bit with 60%. तो सब में दोनों में 60% लेना था in order to pass the test. So it's up to them. It's up to them कि वो किस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, and you never know. तो इट इज़ बेटर कि आप सारे जितने भी सेक्शंस हैं उन सबको बहुत अच्छी तरीके से करें. डोंट लीव एनी सेक्शन कि ये वीक है या फिर हम उसको दूसरे सेक्शन पे कंपनसेट कर लेंगे, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन से सेक्शन को वो डिसरिगार्ड कर दें. समटाइम हर दफ़ा नहीं होता है, बट इट कैन हैपन, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. After clearing the test, the selected candidates are called for the interview. Around 300 till 400 candidates clear the test and then they are called for the interviews. Interviews of Aga Khan University holds a lot of importance because sometimes you clear the test, you have very good grades, but you get rejected in the interview, so you don't get admission. So your interview should go really well in order to get admission. There are 2 interviews that are conducted. 2 interviews back to back होते हैं with 5 minutes break in between, and the average total duration of one interview and what they say on paper is around 30 minutes. But it depends upon you कि अगर इंटरव्यू अच्छा जा रहा होता है तो it can exceed from 30 minutes, it can also exceed from 1 hour. तो कभी कभार लोगों का 1.5 hour तक भी जाता है इंटरव्यू. सो इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन यू. एंड अगर इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं जा रहा है तो 30 मिनट से कम भी हो सकता है. तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह इंटरव्यू को लेकर जा रहे हैं. So the interviews at Aga Khan universities are not formal, they're rather like a casual conversation, as if you're talking to a friend. So you should feel comfortable enough to answer all the questions accordingly and confidently. So there are certain pro tips that you must keep in mind when you're appearing for Aga Khan interview so that you will be selected. Number 1, keep the interview like a casual conversation. Consider the person who is sitting in front of you as a friend or someone who wants to know more about you. Don't go with the pre-prepared answers. Don't rehearse your interview. You can rehearse your interview, but don't learn the answers. हम क्या करते हैं, memorize करके जाते हैं, and that makes you look really underconfident because you're trying to remember things. They're asking you a question, and then you're like remembering the answer that you have learned for the particular question. That is really wrong because the interviewers are quite friendly at AKU. So don't make it look like as if someone is inspecting you. Just be chill and pretend that you are comfortable enough. So staying comfortable is the key. Pro tip number 2, try to show what you're best at. In Aga Khan University, the interview in Aga Khan University is carried out in a way that they ask you general questions, and based upon your answers, the interview is basically carried out. ये general rule है, ये हर जगह इस तरह follow ही होता है. तो it is basically you who is directing your whole interview. So it is in your hands कि what you are showing the interviewer, what you are trying to present in front of the interviewer. So you can actually present the best part of yourself or your academics or your personality. Anything you are good at, you can show that part to the interviewer. Obviously, if you are applying for admission, you will try to maintain a good impression of yours. So it is better to talk about something that you are best at, that you are confident in, and something that you can talk more about. For example, if the interviewer is asking about academics and you're good at a particular subject, so you will talk more about it. So उसी तरह से फिर questions आगे बढ़ते चले जाएंगे. You will have more things to talk about and you will have more things to present. So it is better to take or divert the interviewer to a part that is best and that is presentable. So pro tip number 3
is that honesty is the best policy. It is very easy to lie about yourself, and it is very easy to present a fake personality of yours. But don't forget that the person who's sitting in front of you and the person who's taking your interview is trained for the job. They are trained people and they know how to catch lies. So even if you're trying that, the person will catch your lies. Secondly, even if he does not catch even if he does not get that you're lying, it is unethical. It is not at all ethical in the first place to lie about yourself and about your academics or anything, because especially when you're starting an interview, when you're beginning your career. So it is unethical and it is not at all a good idea to present a fake personality of yours. And even if in case they catch you, it might result in the rejection. So, and if you get selected, let's suppose if you get selected after lying, then how will you satisfy yourself? So think about it. Be yourself and let people choose you for what you are, so that you are satisfied in the end. Pro tip number 4: volunteering in any institute can add into your points. What I mean to say is that Aga Khan University may consider किया जाता है if you have volunteered, so it adds into your points. और जो आप certificates वगैरह submit करते हैं, it basically adds into your points. But here the point is not the certificates. It is basically if you are appearing for the test for your admission and you're starting your career, so you should have a good sense of what you are starting. You should have a good sense of how things work at hospitals and in organizations. So basically, volunteering helps you get a good idea about everything, how things work, how good at things are you, and it gives you a sense of responsibility and sense of satisfaction that what you are choosing is right for you. So it is बेटर कि अगर आप कहीं पर इंटर्नशिप कर लें या वॉलंटियरशिप कर लें एनी हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन और वेर एवर दैट इज़ सूटेबल फॉर यू. इट इज़ ऑल्सो काउंटेड. सर्टिफिकेट्स भी काउंट होते हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस. Fee structure for Aga Khan University is very different from other private medical universities in Pakistan, in Karachi especially. So I'm giving you a rough idea, a general idea about how much is the cost for first year, second year and other subsequent years. So it is not the exact value. हर साल change होती है और थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है. I'm just giving you a rough idea ताकि आपको अंदाज़ा हो कि what amount you must have when you're applying for Aga Khan University admission and if you get selected, inshallah. So first of all, in your first year में one time charges थोड़े ज़्यादा होते हैं. Like with your tuition fee, there is admission fee and there are other security deposit and other one time charges. So it costs you around 23 till 24 lakhs. इस साल के हिसाब से around 23 till 24 lakhs for your first year, including all the charges and the taxation. And for the second year थोड़े से charges कम होते हैं because आपकी one time pays हट जाते हैं और जो है थोड़े से admission fee हट जाती है. So for second year it is around 18 till 19 lakhs. हर साल थोड़ा सा percentage बढ़ता है लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होता. So around 18 till 19 or 21 lakhs. Alright guys, so this was the end of the video. I tried to cover every topic and every confusion that you might be having. I hope I answered all your queries. If you have queries, you can tell me in the comment box below. If you can afford Aga Khan University test, then do go for it, do work hard for it. Inshallah you will get admission. Getting admission in Aga Khan University is itself a proud moment, a big achievement. So good luck for that. Take care. Allah Hafiz. घबराना नहीं है.